इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं हैदराबाद हाउस, जहां पर जॉइंट स्टेटमेंट भारत और जापान के बीच जो 9वीं शिखर बैठक हुई है, उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। यहीं पर जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज किया जा रहा है। ये 9वीं शिखर वार्ता है और दोनों देशों के बीच जिस तरह से संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, उसका एक तरह से इस जो साझा बयान अभी जारी होगा, जो संयुक्त संवाददाता सम्मेलन होगा, उसमें यह साफ तौर पर दिखाई देगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हैदराबाद हाउस से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो शिखर वार्ता हुई, उसके बाद कई समझौते होने की उम्मीद है और उस पर दस्तखत किए जा रहे हैं इस वक्त। और जैसा कि हमने बताया कि कुछ ही देर में दोनों संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और साझा बयान जारी किया जाएगा। कई अहम समझौते दोनों देशों के बीच होने की उम्मीद जताई जा रही थी, जिसमें बुलेट ट्रेन की भी बात थी कि भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन उसको कैसे रन करना है, उसके बारे में भारत और जापान के बीच एक समझौता हो सकता है। आर्थिक मोर्चे पर कई अहम और समझौते दोनों देशों के बीच आज हुए हैं। इस 9वीं शिखर बैठक में इसकी उम्मीद जताई जा रही है, कुछ ही देर में इनका ऐलान किया जाएगा। His Excellency the Prime Minister of Japan, and on the Indian side by the Honorable Prime Minister of India. Next, we have the Memorandum of Cooperation between the Government of the Republic of India and the Government of Japan on high-speed rail. This will be signed on the Japanese side by Mr. Kenji Hiramatsu, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Republic of India, and on the Indian side by Shri A.K. Mittal, Chairman, Railway Board. ये भारत के बीच बुलेट ट्रेन या जो रेल के क्षेत्र में जो समझौते होने हैं, इस पर उस वक्त दस्तखत होते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन A.K. मित्तल और जापान के उनके समकक्ष And finally, we have the agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Japan concerning the transfer of defense equipment and technology. This will be exchanged on the Japanese by Mr. Kenji Hiramatsu, Ambassador of Japan to the Republic of India, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary. रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच एक अहम करार हुआ है। डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर को लेकर के भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर इस वक्त उसको दस्तखत करते हुए। This concludes the signing ceremony. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this joint press interaction. We will have statements by the two Prime Ministers. I will first invite the Prime Minister of India,
the Honorable Shri Narendra Modi to deliver his statement. Your Excellency, Prime Minister Abe, members of the media, I am delighted to welcome Prime Minister Abe to India. It is a great pleasure to host a personal friend and a great champion of India-Japan partnership. No partner has played such a decisive role in India's economic transformation as Japan. No friend will matter more in realizing India's economic dreams than Japan. And I cannot think of a strategic partnership that can exercise a more profound influence on shaping the course of Asia and our interlinked ocean regions more than ours. That is why we deeply value our special strategic and global partnership. It enjoys unmatched public goodwill and political consensus in India. It also comes with great public expectations and huge responsibilities for us. In the course of the past year, we have done much to live up them. We have made enormous progress in economic cooperation as also in our regional partnership and security cooperation. Prime Minister Abe has been prompt and positive on our economic proposals, many of which are now unique to India. Japanese private investments are also rising sharply. Today, we have scaled new summits in our shared journey. The memorandum we signed on civil nuclear energy cooperation is more than just an agreement for commerce and clean energy. It is signing symbol of a new level of mutual confidence and strategic partnership in the cause of peaceful and secure world. I know the significance of this decision for Japan, and I assure you that India deeply respects that decision and will honor our shared commitments. No less historic is our decision to introduce high-speed rail on the Ahmedabad sector through the Japan's Shinkansen, known for its speeds, reliability, and safety. We greatly appreciate Prime Minister Abe's extraordinary package of approximately $20 billion and technical assistance on very easy terms for this project. This enterprise will launch a revolution in Indian railways and speed up India's journey into the future. It will become an engine of economic transformation in India. We also appreciate the sharp increase in Japanese bilateral assistance program and the strength of public and private Japanese commitment for the Make in India mission. In September 2014, in Tokyo, Prime Minister Abe spoke of $35 billion of Japanese finance and investments for India over 5 years. It was ambitious, but together we are quickly turning it into reality. Our shared commitment
to combating climate change is equally strong. We are engaged in wide-ranging collaboration in clean energy and energy efficiency technologies that will also create solutions for the benefit of others in the world. The other agreements today reflect the depth and diversity of our cooperation. Today, we have also taken two more decisive steps in our security cooperation. The two agreements will deepen relations and promote defense manufacturing in India. This builds on our decision to expand staff talks to all three wings of the armed forces and make Japan a partner in Malabar naval exercise. We have also advanced our regional partnership in the course of the year. We have raised the level of our trilateral dialogue with the United States and launched a new one with Australia. We'll work together in East Asia Summit to promote an inclusive, balanced, and open regional architecture and maritime security in the region. We stand strongly for ensuring freedom of navigation and overflight and maritime commerce. We believe that disputes must be resolved peacefully and that all countries must abide by international law and norms on maritime issues. I also appreciate Prime Minister Abe's support for India's membership of the APEC. We will also strive for our rightful peace and a reformed UN Security Council. Culture and people breathe life into our relationship. Our remarkable relationship also has a wonderful human touch. The Kyoto-Varanasi partnership is one of its strong symbols. Last year, Prime Minister Abe hosted me in Kyoto. Later today, I will show him the ancient heritage of Varanasi and our plans for its modern future. Finally, in recognition of our special relationship, India will extend visa on arrival to Japanese cities, including for business purpose from 1st March 2016. This is different from the electronic visa facility that is being extended globally. Excellency, in a world of intense international engagements, few visits are truly historic or change the course of our relationship. Your visit, Mr. Prime Minister, is one. As we work to realize the vision 2025 of India-Japan ties, we will advance the prosperity of our people and shape an Asian century in our vision and values. Thank you. Thanks a lot. May I now invite His Excellency Mr. Shinzo Abe, the Prime Minister of Japan, to make his statement. Namaskar. まずはじめに、チェン内豪雨により、犠牲となられた方々に対し、心から哀悼の意を表するとともに、被災された方々に謹んでお見舞いを申し上げます。今日ここから日印新時代が始まります。先ほど私とモディ首相との首脳会談により、まさにその幕開けとなる首脳会談を行うことができました。歴史的な首脳会談となったと考えています。私は常々、日印関係は世界で最も
可能性を秘めた二国間関係であると述べてきました。今回の訪問では、その可能性のつぼみを現実に開花させることができ、花を開かせ、そして花が咲き誇る関係へと、新たな次元へと踏み出すことができ、考えています。日本とインドは普遍的価値を共有する歴史的な友好国であります。その日印両国が地域の平和と繁栄のために緊密に協力をする。このことは戦略的観点からも極めて重要であります。このような認識で、私とモディ首相は完全に一致をしております。強いインドは日本のためになる。強い日本はインドのためになる。そしてモディ首相は強い意志と決断力、実行力ある指導者であります。モディ首相と協力してアジアや世界の平和と繁栄を牽引してまいります。このようなビジョンのもと、今般日印新時代の道しるべとなる共同声明をまとめることができました。心より嬉しく思います。まず、政治安全保障分野での協力の象徴がただいま交換された防衛装備品及び自由追転協定と情報保護協定です。この基盤の上に具体的な協力が発展していくことを期待しています。米印の海上演習であるマラバールに日本が恒常的に参加していくこと、日印米、日印豪の3カ国協力を強化していくこととも一致したことは大変有意義なことであります。また今般、日印間の平和的目的の原子力協力全般に基礎を与える協定につき、原則合意に至りました。インドは2008年9月に核実験モラトリアムの継続、軍民分離の実施、厳格な輸出管理措置を含む約束と行動と呼ばれる政策を表明し、原子力の平和的利用を進める固い決意を明らかにしています。これを前提に合意した協定においては、日本による協力について平和的目的に限定する内容を確保しています。原子力の平和的目的の利用について、インドが責任ある行動を取り、共に核兵器のない世界を目指していくことを期待します。日本は NPT 普遍化、CTBT 早期発効、FMCT の早期交渉開始を重視しており、これらの点について対話を続けていきたいと考えます。経済分野では、モディ首相が進める改革イニシアティブを日本は官民に挙げて力強く後押ししていきます。ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道日本の新幹線システムの採用が決まりました。日印新時代の幕開けにふさわしいプロジェクトです。安全性、正確性を誇る日本の新幹線システムを活用したインドにおける高速鉄道の第1号路線の実現に向けて、今後具体的協力を進めていきます。そして新幹線システムがインドの他の高速鉄道路線にも導入されていくことを強く期待します。インドに進出する日系企業数は確実に伸びています。デリー、ムンバイ、チェンナイ、バンガロールの産業街道を含むインドへのさらなる投資促進のため、日本工業団地周辺のインフラ整備と具体的な投資環境の改善を進めていくことで一致いたしました。今回の訪問に先立ち、支援を決定した
アーメダバードやチェン内の地下鉄は混雑の緩和を通じて市民の生活環境を便利で豊かにしています。また、ネクシーと JPEC がインドに進出する日本企業に向け、1.5 兆円の金融ファシリティを設け、この規模のビジネス機会を力強く創出してまいります。さらに、今年度の対インド円借款については、約4000億円規模となることが見込まれています。日本はこれらを通じて、インドにおける質の高いインフラの整備、メイクインインディア政策、日本からの投資進出を後押ししてまいります。モディ首相が掲げるアクトイーストと質の高いインフラのシナジーにより、南アジアと東南アジアを結ぶ戦略的な地域連結性を高めます。これによってアジアのさらなる繁栄を日印で牽引していきたいと思います。人的交流の分野は、日印関係を一層裾野の広いものとするための重要な分野です。日本はスキルインディアに貢献するため、今後5年間で官民合わせて1万人のインド人留学生や短期徴兵の支援を目指します。数字、ビザおよび商用数字ビザの緩和を決定しました。インドの皆様、どうぞ日本を訪問して大歓迎いたします。インドから多くの方々が日本を I hope many people in India will visit Japan. 本日の会談では、 In today's 二国 meeting, 間関係に加えて、地 in 域情 addition 勢や to the 国 bilateral 連安保理 relations, 会 Prime Minister Modi and I also share the view to closely work together on the global issues, such as the regional situation, reform of the UN Security Council, disarmament and non-proliferation, and モディ首相 terrorism. とインドにとって I'm pleased to be able to visit プラナシを Varanasi, a special city for India, with Prime Minister Modi this 我々の afternoon. 友情の証として、 Will extend cooperation to India to work toward building an international conference hall in Varanasi as a sign of our friendship. アジアの2大 Japan and India are two major democracies in Asia. 自由、 We share the fundamental values such as freedom, democracy, human rights, and rule of law. 私たちは地域、 We さらには世界 desire に peace and prosperity in the region as well as in the 大 world きな and share a great responsibility to realize them. その強い絆で結ばれた The cooperation between Prime Minister Modi and I, as well as between Japan and India, bound by strong ties, has infinite 私はそう potential. 確信してい I'm ます。 convinced of that. 日印の間に広がるフロンティアは The vast frontier that spreads between Japan and India expands indefinitely in wide areas ranging from politics and security to economy, infrastructure, agricultural services, and people-to-people exchanges. 輝かし I'm い resolved to carve out a brilliant new era of Japan and India together with Prime Minister Modi. ダニワード Dhanyawad. Thank you very much. Thank you very much. I thank the two Prime Ministers for their statements. This concludes the joint press briefing. Thank you all. तो भारत जापान के संबंधों में नए युग की शुरुआत है, ये प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा। जो जॉइंट स्टेटमेंट था, संयुक्त संवाददाता सम्मेलन था, उसमें सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं भारत और जापान दोनों इसके लिए मिलकर काम करेंगे। और उन्होंने एक बड़ा जो ऐलान किया वो कहा कि वाराणसी में भारत और जापान के
संबंधों को दिखाने के लिए, संबंधों का जो एक प्रतीक है उसके लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वहां पर बनाया जाएगा वाराणसी में और जापान की मदद से। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो भी हम आपको बहुत संक्षेप में बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना निजी मित्र कहा शिंजो आबे को और कहा कि भारत और जापान पार्टनरशिप के वो बड़े चैंपियन हैं शिंजो आबे। उन्होंने कहा कि जापान जैसी भूमिका किसी भी मुल्क ने नहीं निभाई है। जब भारत के आर्थिक स्वप्नों को पूरा करने की बात आती है तो जापान की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि स्पेशल स्ट्रैटेजी ग्लोबल पार्टनरशिप है जापान के साथ और उन्होंने कहा कि हमारे आर्थिक प्रस्तावों पर जापान के प्रधानमंत्री बहुत ही पॉजिटिव हैं। $12 बिलियन का असिस्टेंस देगी मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड ट्रेन चलनी है उसके लिए और इसके साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंट भी जापान मुहैया कराएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। मेक इन इंडिया के लिए $35 मिलियन जो हैं वो भारत में 5 साल में निवेश किए जाएंगे। क्लीन एनर्जी और एनर्जी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने का फैसला किया है। सिक्योरिटी जो कॉरपोरेशन है यानी कि रक्षा क्षेत्र में भी 2 अहम करार हुए हैं और इसमें मालाबार नेवल एक्सरसाइज में की बात प्रधानमंत्री ने कहा ये जापान के साथ मिलकर किया जाएगा और ये भी उन्होंने कहा कि एपेक में भारत की भूमिका है। एपेक में भारत को एक साझा देश बनाने के लिए जापान लगातार इसके लिए बात कर रहा है। वीज़ा ऑन अराइवल की बात की प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के नागरिकों के लिए 1 मार्च 2016 से वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा से अलग है और उससे ज़्यादा सुविधाजनक है। विजन 2025 की बात की भारत और जापान के रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप सीधा प्रसारण देख रहे थे और भारत जापान संबंधों को लेकर आज बहुत कुछ होने वाला है। जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों वाराणसी जाने वाले हैं जहां दशाश्वमेध घाट पर दोनों गंगा आरती में शामिल वाली नजर बनी हुई है और हम आपको लगातार इसका सीधा प्रसारण भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल हिंदी समाचारों में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए लेकिन